Hello everyone, let's continue with the time complexity. So first time complexity, that is a constant time complexity represented by order of 1. Second one is logarithmic time complexity, and logarithmic it is represented by logarithmic is represented by it is a order of log of n, right? So it is represented by order of log of n. Next, third it is a third is it is a linear time complexity. Linear time complexity. Linear time complexity. So linear time complexity is what? It is a order of n. Order of n. This is what the linear time complexity. Next one is quadratic time complexity. Fourth one, we can say it is a quadratic quadratic time complexity. Quadratic time complexity. What is quadratic time complexity? So it will be like order of n square. Order of n square, it is quadratic time complexity. Next we can say next one is cubic time complexity. Cubic time complexity. Cubic time complexity, it is a order of just a minute, it is order of n cube. Cubic time complexity, that is order of n cube. Next one we can say it is a polynomial time complexity. Sixth one, it is a polynomial time complexity. Polynomial time complexity. Okay, so what is polynomial time complexity? It is a order of n power c, order of n power c, where c is a constant, where c is a constant, where c is a constant, c greater than 0. Okay, so c is a constant which is greater than 0. Next one is seventh one, and that is exponential time complexity. Next one is exponential time complexity. Exponential time complexity, that is the order of c power n. C power n means constant power n. So we can say here c is a constant, c is a constant, and c greater than 1. Okay, c is a constant which is greater than 1. Okay, next one is next time complexity, that is a n power n. ठीक है, next time complexity, that is n power n, or this n power n is we can say or we can say it is a n factorial. So n factorial or n power n, they are approximately equal, right? They are asymptotically equal, or we can say approximately equal. So n factorial is approximately equal to n power n, n power n, or we can say it is asymptotically equal to n power n. So these are the major time complexities, right? So these are the major time complexity. So is it clear till this part? Clear. Okay, fine. Then what is the relationship? So we can say this is the relationship between these complexity. First one, it is a order of 1, that is less than order of log of n, order of log of n. Okay,
it is less than order of log of n, and after that we can say it is less than root of n. After that it is order of n, order of n is less than order of n square, and order of n square is less than order of n cube, and order of n cube is less than, it is n power c. Okay, order of n cube is less than order of n power c, which is less than exponential, which is less than c power n, and which is less than n power n or n factorial. Okay, this is what the relationship. तो कहेंगे पहले कांस्टेंट, उससे बड़ा कौन हो गया log ऑफ n, उससे बड़ा रूट ऑफ n, आफ्टर दैट ऑर्डर ऑफ n, उससे बड़ा n स्क्वायर, उससे बड़ा n क्यूब एंड so on. Is it clear till this part? Okay, now let's see some of the example, or we can say questions based on these complexities. Let's see. So here question number 1, that is finding out true or false. Find out it is true or false. Here option A, it is given as 100 n log n, 100 n log n equal to order of n log just a minute. Order of n log n, order of n log n divided by 100. Okay, order of n log n divided by 100. Second, option B, that is a root of log n, root of log n, root of log n equal to order of log n, order of log n, order of log n. Next, C, option C, it is a 0 is less than x, 0 is less than x is less than y, 0 is less than x, x is less than y, then n power x, n power x equal to order of n power y, order of n power y. And option D, it is 2 power n, 2 power n, that is not equal to order of n power k, order of n power k, where k is a constant, where k is a constant, where k is a constant. Okay, so find out which one is the true relationship. ठीक है, तो क्या इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 100 n log n है, और ये क्या दे रखा है, ऑर्डर ऑफ n log n. क्या ऐसा लिखा जा सकता है, राइट? और ऑर्डर ऑफ n log n लिखने का मतलब क्या हुआ कि ये क्या होगा, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तभी लिखा जा सकता है ना, राइट? तो या तो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा, तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं या नहीं है, राइट? सो ट्राई टू फाइंड आउट.
Option A, it is true. Okay, that may be. Okay, that may be. Okay, let me simplify. Let's see first one, option A. So here it is 100 n log n, which is equal to order of n log n log n divided by 100. Can we say this one? Okay, so one thing, you can ignore the constant terms. So ignore constant term. Now they both are equal. N log n equal to n log n. They both are equal. It means if it is equal, we can say it is a order of n log n. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या रहेगा? This one is true. This one is true. Is it clear? Yes, first one is clear. Okay, next let's see second one, that is the root of log n. Second one is log n root of log n equal to order of log n. Okay, so this root of log n, that can be written as log of n power 1 by 2, and here it can be written as log of n. Now apply log both side. Let me apply log. So here we have applied log, here also we have applied log. Okay, तो apply कर दिया दोनों साइड log. Now what will happen, let's see.
So one property of log is that whenever it is a log of n and this situation, so in this case this power will go to here. Okay, so it is 1 by 2 log of so here it is 1 by 2 log of n, right? It is 1 by 2 log of n, which is equal to log of log of log n, right? It means this constant can be ignored. Now log of log n, and this one is triple time log of n. So this one is what? It is log of log n 2 times and it is 3 times. इसका मतलब कुछ ऐसा हो गया ना कि if I take a n value equal to 16, n equal to 16, then firstly I will do this log. Assume it is log of 16, after that it is log of, and again it is log. Okay, so firstly you solve this one. Result for this one is 4, so again log of 4, and outside also it is log of 4. So what will happen? Log of 4 means it is a 2, again log of 2, that is equal to 1. So result for this one is 1. What about this one? Here it is a log of n. N means log of 16. Okay, so here it is log of 16. Log of 16 means it is 4. Again take log. So log of 4. Log of 4 means 2. Which one is greater? This one is greater ना. So इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली टर्म क्या आ रही है? ग्रेटर आ रही है. और ऑर्डर के केस में ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए. इक्वल नहीं है तो ग्रेटर कौन सी होनी चाहिए ऑर्डर के केस में? ये वाली ग्रेटर होनी चाहिए ना. बट यहाँ पे कौन है? रूट ऑफ लॉग वन, दैट इज ग्रेटर. तो ये ग्रेटर आ रहा है, इट मीन्स इट इज फॉल्स. सो दिस वन इज फॉल्स. सो टेल मी सेकेंड ऑप्शन बी, दैट इज क्लियर और नॉट? बिगो के केस में क्या होता है? ये वाला ग्रेटर होता है ना, और अभी हमारा ग्रेटर कौन आ रहा है? ये वाला ग्रेटर आ रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड. यस, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दैट इज ऑप्शन सी. सो ए और बी का पता चल गया, ऑप्शन सी देखते हैं. सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी, इट इज 0 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन y, मीन्स y इज ग्रेटर 1. ठीक है, y क्या है? ग्रेटर है. इसका मतलब यहाँ पे n है और यहाँ पे भी n है, और इसकी पावर x है, इसकी पावर क्या है? y है. तो इसका मतलब क्या हुआ? n पावर x इक्वल टू n पावर y. इसका मतलब y क्या है? ग्रेटर है ना, y इज ग्रेटर देन x. इसका मतलब ये वाली टर्म क्या होगी? ग्रेटर होगी. अगर ये वाली टर्म क्या होगी? ग्रेटर होगी, तो ऑर्डर के फॉर्म में लिखा जा सकता है. इट मीन्स दिस इज ट्रू. ओके, तो ये वाला केस क्या रहेगा? ट्रू. क्लियर और नॉट? okay, and next one is this one. Here it is 2 power n, and here it is n power k, and k is a constant. So k can be any constant. So 2 power n equal to n power k. n power k may be, that is a 1, और इट में बी 2 और सो ऑन, राइट. तो हमने देखा था कि ये वाला जो था ये क्या होता है? इससे स्मॉलर होता है, राइट ना. n पावर k दैट इज स्मॉलर देन 2 पावर n. एक्सपोनेंशियल से ये क्या होता है? स्मॉलर केस होता है, राइट. जो पॉलिनोमियल था दैट इज द स्मॉलर केस, और हमारे पास क्या है यहाँ पे? एक्सपोनेंशियल केस.
तो इसने ठीक बता रखा है कि ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, दे बोथ आर नॉट इक्वल, इट मीन्स दिस वन इज ट्रू। तो ये ऑप्शन डी क्या रहेगा, दैट वन इज ट्रू। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज ट्रू। यस, नाउ इट इज क्लियर और नॉट? भाई ये क्या होता है, ये आपका पोलिनोमियल होता है, और ये टर्म क्या होती है, एक्सपोनेंशियल होती है। इनमें तो कौन सा ग्रेटर होता है, ये ग्रेटर होता है ना, एक्सपोनेंशियल। ठीक है ना। अब ये ग्रेटर होता है तो इक्वल कैसे बोल सकते हैं, तो ये दे बोथ आर नॉट इक्वल, तो सही बता रखा है ना, दे नॉट आर इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो सही है, ये ट्रू है, क्योंकि इक्वल होते ही नहीं है ये। डन। Okay, so these are the four options and we have done all. Now let's see the next question. So next question, find out it is true or false. Find out it is true or false. It is a power, a it is a n plus m, or it is n plus k. Just a minute. It is n plus k and its power m, which is equal to order of n power m. Option B, it is 2 power n plus 1 equal to order of 2 power n. And next one, option C, it is 2 power 2n, 2 power 2n, that is equal to order of 2 power n, that is order of 2 power n. Yes, so these are three options given, and try to simplify which one is true, which one is false. Okay, maybe true. Okay, let me simplify. So here it is n power k power n plus k power m, and here it is n power m. So relationship is what, it is order of n power m. Let's see. So option A, n plus k power m, that is equal to order of n power m. So we can say here it is a n power m plus k power m, n power m, और इसको क्या बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू n पावर
So it is k power m, which is equal to n power m. So now what we can say, this k power m, k is what, constant term, so ignore this one. So it is n power m equal to n power m. ठीक है, दोनों इक्वल हैं तो क्या कर सकते हैं, ऑर्डर के फॉर्म में लिख सकते हैं. फाइनली इट इज ट्रू. क्या चीज, क्या? ऐसे मान लो, यहाँ यहीं से इग्नोर कर दो कांस्टेंट को. कांस्टेंट इग्नोर किया तो n पावर m हो गया, और इधर भी क्या है, n पावर m है, दोनों सेम आ गए ना, तो ऑर्डर के फॉर्म में लिख सकते हैं. यस, क्या? भाई दोनों ही तो m पावर n पावर m आ रहे हैं यार, देख, ये भी n पावर m है, ये भी n पावर m है. अलग है क्या इसमें कुछ? देन इट इज करेक्ट. ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ऑर्डर के फॉर्मेट में रहेगा. देखते हैं, लेट्स सी. So next one is this option B. It is 2 power n plus 1 and equal to order of 2 power n. ठीक है, so 2 power n plus 1 that can be written as 2 power n into 2 power 1, which is equal to order of 2 power n. इसका मतलब क्या हुआ, ये कांस्टेंट है, इग्नोर कर दिया. सो 2 पावर n दैट इज इक्वल टू 2 पावर n. जब इक्वल होते हैं तो ऑर्डर के फॉर्म में लिखा जा सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 पावर n है, यहाँ पे भी 2 पावर n है, तो क्या कर सकते हैं, ऑर्डर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं. इट मीन्स इट इज ट्रू. यस, इज इट क्लियर? ओके ओके ओके. नेक्स्ट वन, इट इज 2 पावर 2n equal to order of 2n. Option C. It is 2 power 2n equal to order of 2n. So 2 power n that can be written as 2 power n into 2 power n, which is equal to 2 power n. So 2 power n to 2 power n cancel. So which one is greater? ये वाला ग्रेटर है ना. इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड अगर ग्रेटर है, अगर ये ग्रेटर है तो ऑर्डर के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, है ना. इट मीन्स दिस वन इज फॉल्स. सो इज इट क्लियर टिल दिस पार्ट? ओके. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. So next one is true or false. Option A, it is n square into 2 power 3 log n base 2, 3 log n base 2, that is equal to theta of n power 5, theta of n power 5. Just a minute. Theta of n power 5. Okay, next option B, it is 4 power n, here it is 2 power n, 4 power n, 2 power n, and that is equal to
theta of 2 power n. Next one is option C, it is 2 power log of n base 2, log of n base 2, that is equal to theta of n square, theta of n square. So these are the three options given, and try to simplify what should be the answer. ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसको क्या करना है, अरेंज करना है। इनको अरेंज करना है कि पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा, लाइक f1n दैट इज लेस देन f2n, लाइक दैट। ठीक है, इनमें से ग्रेटर है या लेसर है, एक अरेंज करके दिखाना है इनको। ओके, सो अरेंज देम। ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ये घर से ट्राई करना है।